Hello and welcome everybody students. Today we will discuss about some other disease, okay, which is caused by pathogen. Okay, so we are continuing our chapter health and disease. Yes or no? आम यही चैप्टर छुआ बर्तमान कंटिन्यू कर तो ता भितर आम कौन कौन पढ़ीदे ना आम पाथोजेन विषय पढ़ी एंड दिस पाथोजेन्स कॉजिंग डिजीज विषय पढ़ुं यस और नो। तो पाथोजेन कॉजिंग डिजीज विषय मध्यरु आम कौन पढ़ी सारी ना वी हैव ऑलरेडी learn about filariasis and malaria. So now we will today discuss about 3 more diseases. Clear? So let's start from ascariasis. Clear? So today we will discuss about ascariasis, then typhoid, then pneumonia, then cold. 3 main disease. So ascariasis is mainly tam koi chua when the question will come from this chapter, it mainly will be 2.5 mark. Clear? So in 2.5 mark you have not to describe large things or many things. You simply focus on what is the cause of that disease if question comes from this chapter. So you have to mention what is the cause, you have to mention also what is the symptoms of the disease or of the given disease, and then what will be the prevention or precaution of the disease, how we can avoid it, and also you have to mention 1 or 2 line about treatment. If you already get infected by this disease, then what will be the solution, what will be the treatment, which medicine will you have to consume. So these are the all about of what you have to mention, what you have to written if the question comes in your exam. So first cause, symptom, prevention and treatment. So in ascariasis disease, it mainly first we have to discuss cause. Clear? In ascariasis disease, the cause is by causative or the causative agent is a round worm. What? Round worm. गोल कृमि गोटे या रोगर कारक बा कारण गोटे गोल कृमि अच्छी जहाँ पाई ascariasis हुए. So what is the name of that round worm? This round worm mainly is ascariasis by Ascaris lumbricoides. You have to remember this name. 1 mark question may come in this chapter also. So you have to specially remember the which is the causative agent or which pathogen cause this disease. So what is the name of disease causing agent in case of ascariasis? So it is Ascaris lumbricoides. How it looks like? It simply looks like a round worm. Okay, so this is the outer appearance of the worm, Ascariasis lumbricoides. Okay, so it is a round worm. Then where it lives? Clear? Where it lives? Normally it is a endoparasite. Endoparasite. समझ में आ रहा है ना बेटा? Endoparasite means it lies under an individual or in this case it lives inside the body of human being. Endoparasite माने
आम बॉडी भितर बा अन्य कौन गोटे जीव जी कि आउ गोटे जीवंत जीवर बॉडी रे जीवन यापन करे बा ता लाइफ साइकिल को मेंटेन करे है जेकोसी पारासाइट मीन्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन another living organism. So if that parasite lives under that living organism, then that parasite will be known as endoparasite. Endo means on inside. Parasite will be the host. जहाँ parasite माने जहाँ परजीवी, parasite means परजीवी जी अलग गोटे जीव उपर निर्भर करे. So it is a endoparasite. It lives in intestine. It lives in intestine of human being. Is it clear? Why it is known as a endoparasite? Because it lives inside in the intestine of human being. Human being BEING human being मनीष मानकर इंटेस्टाइन जो अंत नली रहा ता भितर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तो ये सही जगह कौन करे ना बसवास करे तार हूँ लिविंग प्लेस सेटा तो यहाँ नॉर्मली क्या हुए ना नॉर्मली आडल्ट मानक छुआ हुए ना कि बड़ लोक मान नॉर्मली हो न था यहाँ नॉर्मली दिस डिजीज नॉर्मली सीन इन केस ऑफ चिल्ड्रेन है क्या पाखे देखा जाए मेनली छुआ ना मेनली इट अकर्स इन चिल्ड्रेन है frequently occur frequently it occurs clear children मानक भितर ए डिजीजटा frequently occurs माने देखा जाए मन रहा केतटा जिनस ना फास्ट है कज किए कज कॉजेटिव एजेंट किए ना कॉजेटिव एजेंट गोटे एंडोपारासिट से एंडोपारासिट ना कौन ना आस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड एटा गोटे केमितिया वर्मटा ना एटा गोटे राउंड वर्मटे गोल कृमि मेनली क्या हुए ना चिल्ड्रेन मानक हुए बड़ लोक मान पाखे देखा जाए नॉर्मली स्वभावतः देखा जाए ना आउ एटा कोठी रहे इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग सो फर्स्ट पॉइंट इज योर क्लियर इज इट क्लियर और नॉट कॉज इज क्लियर. So now we have to discuss about symptoms. What is the symptoms? लेखुच ना नहीं छुआ मझे मझे लिखी दो तो है What is the symptom of ascariasis? Symptoms माने लक्षण छुआ कौन कौन देखा जीव तो फर्स्ट सिम्पटम है छुआ जेहेतु एटा इंटेस्टाइन रोचे आम इंटेस्टाइन कौटे अच्छी छाती रे अच्छी ना पेटरे अच्छी पेटरे अच्छी यही जगह अच्छी इंटेस्टाइनटा तो ओबियसली इंटेस्टाइन रिलेटेड किसी सिम्पटम्स देखे से जेहेतु इंटेस्टाइन आमर मेनली कौन हुए स्टोमाक और इंटेस्टाइन आमर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुए बा ह्यूमन बीइंग रे मनीष मान क्षेत्र में बा अलग जो माने डेवलप्ड एनिमल रहिले तो से क्षेत्र में कौन हुए ना डाइजेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन इंटेस्टाइन. It starts from mouth. Though it started from mouth, it also continues through stomach and ends in intestine. So the symptom will be related to digestion. So in this case, what will be happen? Indigestion of food. Clear? This is the most common symptom in this case indigestion of food. तब इंटेस्टाइन रहा ना सी इंटेस्टाइन को कौन कर इट ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ इंटेस्टाइन द पैसेज थ्रू व्हिच फूड नॉर्मली passes during digestion process. That passage will be blocked by this endoparasite called as ascarias lumbricoides. So this parasite mainly blocks this passage. As a result, the indigestion of food occurs by happens. Yes or no? Indigestion happens. If indigestion process happens, if the food is not completely indigested, then you will feel abdominal discomfort. So it will raise to abdominal discomfort. Abdominal discomfort. पेट गोलमाल हम छुआ बुझीपार कि ना
खाद्य हजम होना कारण कौन ना आम इंटेस्टाइन जो रास्ताटा अच्छी जो बाटे फूड डाइजेस्टेड फूड जीवा कथा जो डाइजेस्टिव जुइस सिक्रेट होगी से जगह फूड को डाइजेशन करिया कथा तो से जगहटा जेहेतु ब्लॉक हो जाइए से जगह प्रॉब्लम है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वायरस so it will result abdominal discomfort, abdominal pain. Okay, so also we will feel normally it occurs in children. Normally children will feel abdominal pain. बापा लो माँ लो कोई की कौन कहे पेट काटुची जानी ना छुआ मानकर केमी हुए तो से कहे ना मरीगली लो माँ लो पेट काटल तो दैट इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। समझ में आ गया ये दोनों पॉइंट। नेक्स्ट व्हाट विल हैपन इफ द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड दैट मीन्स द न्यूट्रिएंट you would have got from that food will not be available to your body। जो न्यूट्रिएंट यही फूड डाइजेशन होगा द्वारा तुमको मिल पारि था तो से न्यूट्रिएंट से आमर वाटर हो विटामिन्स हो प्रोटीन हो फैट हो तो से न्यूट्रिएंट टा तुमको मिल पारिबनी बिकॉज द फूड इज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन दैट पर्सन। सो व्हाट विल बी हैपन ना इट विल नॉट हेल्प दैट व्हाट एवर यू विल ईट दैट विल नॉट हेल्प इन योर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। सो द ग्रोथ of body will be hampered, or you may write it the poor growth of body will happen। also poor mental development। खाद्य यदि तुम जहाँ खाइब देहरे न लगे तो ना देह काम करिवो ना मुंड काम करिवो। सो मेंटली भी से पिला कौन हम वीक हम तो पोर मेंटल डेवलपमेंट भी देखा दब। सो ऑल आर क्यूमुलेटिव यस और नो वन रीजन leads to another region or one problem leads to another problem। first problem is indigestion, it leads to abdominal pain, that leads to abdominal discomfort। again if digestion is will not be proper so the nutrients cannot be abstracted or cannot be obtained from that food, that means our body growth will not be happen properly or it will be hampered, and again poor mental development will be the result। so these are the symptoms of ascariasis disease। next what is in our line is prevention, how we will prevent in this case। यही रोग को आमको रक्षा पाइबा हेले आम प्रिभेन्स माने ट्रिटमेंट नुहे एटा प्रिभेन्शन ट्रिटमेंट अलग अच्छा। प्रिभेन्शन माने तुम गोटे डिजीज हवा पूर्वर तुम प्रिकसन नेल प्रिभेन्शन नेल सो दैट यू विल नॉट बी अटैक्ड बाय दिस डिजीज, किंतु वन्स डिजीज हो गला परे यू कैनॉट टेक प्रिभेन्शन। ओके नाउ आफ्टर अटैक द डिजीज वन्स डिजीज गेट अटैक्ड तो यू हैव टू टेक treatment, take medicine। so prevention it occurs but it happens before the disease attacked। okay disease attack hova purvaru you have to take prevention। what will be prevention now as it is found as it is common in children, so you have to make awareness among children। what type of awareness now it may be wash your means children's hand properly। ओके खाद्य थ्रू रे मेनली होची बुझिपार ना तो आम हाथ खाइबा पूर्वर हाथ ठीक से धोया पिला मानक शिखेबा है बिफोर इटिंग। wash your hand properly before eating। clear?
जी आम इंटेस्टाइन डिजीज हूँ डाइजेशन सहित रिलेटेड से सब नॉर्मली फूड और कंटामिनेटेड वाटर पर हुए मेनली तो से आम हाथ ठीक से धोइबा आउ कौन करवा ना wash the vegetable and fruits before cooking or before eating wash the vegetables and fruits properly हाला before eating समझ में आ गया खाइबा पूर्व प्रति परिबा आउ फ्रूट्स फल को हाथ भलसे धोइबा है आउ छुआ मान को अवेयरनेस भी एबारे करवा आउ कौन करवा आउ आमर खाद्य केमिति दूषित होता ना डस्ट है ना नहीं डस्ट पड़ूला खाद्य रे डस्ट पड़े बाहर आम इफ वी टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम मार्केट इट मे बी देयर इज चांस ऑफ contaminated dust clear or it may be come in contact with flies माछी मान सहित so avoid contamination of food from dust and flies clear तो माछी आ धूली मानक ठारू आम कौन कर खाद्य को यथा संभव दूरे रखापी चेष्टा कर अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ फूड फ्रॉम डस्ट एंड फ्लाइज एंड एनश्योर निश्चित कर कौन निश्चित कर एनश्योर दैट द चाइल्ड डू नॉट बट डजंट ईट सॉइल ओके छुआ तुम्हें कन्फर्म कर कि जो छोट छुआ रही घरे से माने माटी बेले बेले खाती ना नहीं से माटी रे भी यही आस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स नामक एंडोपारासाइट देखा जाए तो सेठू माटी मान छुआ खाई दिखती बेले बेले तो ता थ्रू रे भी आम इंटेस्टाइन को से एंडोपारासाइट अटैक करि पारे सो यू हैव टू अवॉइड ऑल दिस प्रिवेंशन ऑल दिस पॉइंट्स क्लियर आई एम इरेजिंग इट नेक्स्ट प्रिवेंशन खत्म हो गया नेक्स्ट आ गया तुम्हारा ट्रीटमेंट हाउ यू विल ट्रीटमेंट वंस you are attacked with this disease or once a children get infected by this endoparasite what will be the treatment so write about also treatment normally what will be the treatment now there is no in fact there is no specific treatment for this disease you have to abide with all okay abide with all above prevention जेहेतु छुआ प्रॉपर ट्रीटमेंट या पाई नहीं है तो तुम से कौन कर ना तो जो प्रिवेंशन पढ़ले ताकू आम स्ट्रिक्टली मानिबा आउ जदि बेसी इंडाइजेशन है डाइजेस्टिव टैबलेट बा डाइजेस्टिव है जुइस खाईपर आउ गोटे अच्छी छुआ पुदीना टैबलेट जानी ग्रीन कलर देखा जाए पुदीना टैबलेट में हेल्प इन दिस केस जदि बेसी इंडाइजेशन हो यू मे टेक डाइवल है डाइजिन टैबलेट है डाइजिन टैबलेट दिस मे बी द ट्रीटमेंट बट देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इट मे बी परहैप्स help you clear so we have already discussed about ascaris now we will move to next disease next pathogen causing disease which is your typhoid clear typhoid as you know you have listened more often this disease also termed as this disease also termed as enteric fever which means in Odia आंतरिक ज्वर है छुआ
एटा को ओडिया रे आमे कोन कोंती टाइफॉइड हेले ना आंतरिक ज्वर अछि मींस तार अंतनली ज्वर होइला इंटेस्टाइन ले ए ज्वरटा रहउची सो इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज it is a bacterial disease so what which under which point it will come na it will come under cause hana nahi cause bhitar asi jibo it is a bacterial disease which bacteria causes typhoid normally it is salmonella typhi Salmonella typhi. This is the disease causing bacteria or disease causing pathogen which causes this disease typhoid named as typhoid. So you have to remember all the causative agent, all whatever I have discussing the disease you have to remember the causative agent must it is must needed clear. So Salmonella typhi is the causative agent. Okay. It is present in stool and urine of the patient and spread by H2 मेरी भी मान लो नॉन एंटेरिक फीवर हाँ आउ एटा थाए कोठी नॉर्मली आम बॉडी रे बा आम गोटे जन को हब केमिति ना एटा नॉर्मली फास्ट रहे कोठी यार जागा होची इट लाइव्स और इट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन स्टूल एंड यूरिन है छुआ जी आम वर्ज्य वस्तु रही बॉडी रे तो से भितर ये रही था स्टोल और यूरिन स्टोल माने झाड़ा आ यूरिन माने परिस्रा तो झाड़ा और परिस्रा ठू आम सब दूर रहा कारण या थ्रू रे ए डिजीजटा हो स्टोल जदि कौन सी डिजीज पेसेंट बा कौन सी पेसेंट टाइफॉइड पेसेंट रो स्टोल बा यूरिन कंटामिनेशन ले बा कांटेक्ट रे कौन सी गोटे हेल्दी इंडिविजुअल आसे ताले देयर इज चांस ऑफ having this disease in that healthy person. So it spreads through stool and urine. Clear? आउ कौन ना ऑल्सो टाइफॉइड हेल्ले कहते बाहर खाद्य खाइबनी बाहर पानी पीबनी माने प्रदूषित बा दूषित जल आउ खाद्य है सेटा गोटे यार कज तो ये तो है बैक्टेरिया गोटे पॉजिटिव एजेंट रूप में बा गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म भितर साल्मोनेला टाइप गला आउ किछि नॉन लिविंग सब्सटेंस भी अच्छा जमी स्टोल रहा यूरिन रहा कंटामिनेटेड एबायोटिक फैक्टर जोड़ा रहा छुआ तुम कंटामिनेटेड फूड रहा कंटामिनेटेड फूड आउ कंटामिनेटेड वाटर दूषित जल और दूषित खाद्य खाइले भी हमारा नॉर्मली व्हाट हैपेंस नाउ वी विल बी अटैक्ड विथ टाइफॉइड वायरस क्लियर सो यू हैव टू अवॉइड दिस factors. So next which patient passes this disease for several years? There is an interesting person named as Mary Malone MALLON जोड़ा को आम जहाँ को आम कहती टाइफॉइड मेरी दिस इज द इंडिविजुअल who was a cook. This individual was a cook. Clear? Cook means बस सेफ कही पार सी रोसई करे गोटे कौ फूड इन स्टॉल पकईकि गोटे मे बी गोटे कौ होटेल थिला से गोटे कुक बा सेफ थिला तो सी कौन करे ता ना हूँ कौन ना मेरी मालन ताकू कौन सी जना जाए कौन फेमस ना ताकू समस्ते कहते टाइफॉइड मेरी बिकॉज दिस पेशेंट बा दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल unconsciously passes this disease or infected this typhoid disease for several years है बहुत लोकन को से कौन करथिला ना पास करथिला ये डिजीज टाकू passes this disease for several years है कारण सी कौन करे पेशेंटा फ्रिक्वेंटली टाइफॉइड तक हुए टाइफॉइड थ्रू रे टाइफॉइड पेशेंट सी था कंटिन्यूअसली तो सी किंतु जानीपारे सी जेहेतु गोटे रोसई करुच्ची तो से खाद्य कौन है कंटामिनेटेड है वाटर कंटामिनेटेड है आउ सी जेहेतु
से पर्टिकुलर जगह बहुत वर्ष धरी काम करूला तो जी लोक ता पाखक आसुले से रेस्टोरेंट को होटेल को आसुले तो समस्ते कौन कले ना बाध्य से कंटामिनेटेड फूड अजाणत खाऊले सो इट इज दिस इंडिविजुअल पास्ड द डिजीज टू हेल्दी पर्सन फॉर सेवरल ईयर से ना दे लोक कौन फाइनाली टाइफॉइड मेरी है मालन मेरी मालन को कहते टाइफॉइड मेरी कारण सी टाइफॉइड रोग को बहुत वर्ष धरिकी लोक मान संक्रमित कराइला है तो ये है जड़े गोटे पॉजिटिव एजेंट जदिव नुह सेटा गोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट थिंग व्हिच यू हैव टू नो आल्सो यू हैव नॉट टू राइट दिस इन योर एग्जाम क्लियर सो कॉज गला सिम देन आया क्या आया तुम्हारा सिम्टम्स क्लियर सिम्टम्स टाइफॉइड सिम्टम्स तुम जानी ये भी कहते हम कि टाइफॉइड हेल्ले कौन हम छुआ ना ज्वर हम हाई फीवर हम हाँ ना नहीं हाई फीवर हम हेडाक हम मुंड तो बिंधिब ज्वर है माने हेडाक हम हाँ ना नहीं आउ कौन हम टायर्डनेस हम क्लांत लगे और हाई फीवर हेडाक हाँ आउ गोटे कथा फीवर केतबेले हम ये जानी टाइफॉइड हेल्ले टाइम की टाइम ज्वर आसो मेनली इन आफ्टरनून है तो मोस्ट सुइटेबल टाइम फॉर दिस भाइरस और टू फॉर दिस डिजीज इज योर आफ्टरनून टाइम दीपहर समय ज्वर मात्रा बढ़ी जाए द रिगोरिटी ऑफ दिस डिजीज इंक्रीजेस इन आफ्टरनून क्लियर abdominal pain also is a abdominal pain is also a symptom अब incubation period छुआ incubation period होची ए डिजीज पाई normally 1 to 3 weeks it means after you are infected with this with this bacteria. Which bacteria? Salmonella typhi. Once Salmonella typhi enter through contaminated food or stool or water to a healthy body. After entering into a healthy body, it will take 1 to 3 weeks to show some symptom or to cause the disease. जो दिन पशो से दिन तुमको टाइफॉइड हेनी छुआ जो दिन पशो से दिन 1 to 3 week टाइम न बसीए ता भर संख्या बढ़ेब ताकर पॉपुलेशन विल आल्सो इंक्रीज ओके देन दे विल फाइंड सम सिम्टम्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देन वी विल गो टू वेयर यू विल गो टू clinic or you will go to doctors for diagnosis and the diagnosis is known as Widal test. The diagnosis through which we can know that we are affected with typhoid or we are affected with typhoid virus that is Salmonella typhi. It can be recognized by a test known as Widal test. Clear? It is very famous test for knowing or for diagnosing this disease. That means typhoid disease है वाइडल टेस्ट कले ही आम जापर आमर आमको टाइफॉइड है कि नाई क्लियर तो डायग्नोसिस बाय वाइडल टेस्ट आ प्रिवेंशन कौन कर जेहेतु एटा कंटामिनेटेड फूड वाटर स्टोल यूरिन थ्रू रे होची आमको मेनली कौन करते हम प्रिवेंशन लेट कौन करिया आम केमी थ्रू दूरे रहा ओबियसली पर्सनल क्लीननेस गोटे बहुत बड़ा फैक्टर रहिबो पर्सनल क्लीनलीनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑल्सो कम्युनिटी सैनिटाइजेशन तुम जो परिपार्श्वर जो कम्युनिटी रहिले सेठी सैनिटेशन सब करूथबो है क्लीनलीनेस कम्युनिटी सैनिटेशन आउ जो वाटर पीब सब परिष्कार पानी पीब माने स्क्रीनिंग करके पीब है स्क्रीनिंग वाटर पीब टेकिंग कर नॉर्मली बाहर खाऊच जो रेस्टोरेंट रे कि होटेल रे कि बाहर को ठेला खाऊच कि गुपचुप खाऊच सेठी खाइला परे पानी पीबनी से जगह आइदर पानी नहीं कि जाओ सांगरे नहले
बॉटल पानी बॉटल किणी पीब है स्क्रीनिंग वाटर बा तुम फुटा पानी पी पार बॉइलिंग वाटर पी पार है आ कम्युनिटी को सैनिटाइज रख जो कम्युनिटी जो कॉलोनी रे रोच से जगह परिष्कार रखुव सब पर्सनल हाइजीन रख ठीक ठाक मेंटेन करूँ निजे परिष्कार परिच्छन्न रोथुव है कंटामिनेटेड फूड खाइब नहीं खाइला पूर्व भलसे धोब से मुझे लिखुना कि तुम लिख जिते परिष्कार परिच्छन्न हो पार से विषय लिख आउ केमी फूड को किए कंटामिनेट कर हाउस फ्लाई जो माछी घरे बुलती हाउस फ्लाइज पॉपुलेशन को कौन कर कंट्रोल कर है पॉपुलेशन को कौन कर छुआ सर्ट रे लिखि दूची है हाउस फ्लाई पॉपुलेशन कंट्रोल माने हाउस फ्लाई पॉपुलेशन को कंट्रोल कर यू हैव टू राइट अबाउट दिस ऑल्सो सो दिस आर द प्रिवेंशन देन ट्रीटमेंट टाइफॉइड वैक्सीन अच्छी छुआ आ एंटीबॉडी किसी अच्छी तुमको नवाक पड़ो है एटा गला तुम कौन प्रिवेंशन वन्स एटा प्रिवेंशन जदि तुमको वन्स हो गला ताल कौन कर भी ट्रीटमेंट अच्छी ट्रीटमेंट कौन ना टाइफॉइड वैक्सीन देयर इज वैक्सीन व्हिच इज इन्वेंटेड फॉर दिस डिजीज बट दिस वैक्सीन इज नॉट परमानेंटली immunize your body. It normally immunize your body for 1 to 3 years. So there is typhoid vaccine, you can take it. Okay, in specific duration, that means within 3 years you have to take this vaccine again. फिर 3 वर्ष पर पुणी आउ थे नब बुझीपार ना 3 वर्ष पर्यंत से तुम बॉडी की इम्यूनाइज कर है 1 to 3 years तापर ये आ वैक्सीन काम दब ना पुणी नब आउ कौन अच्छी ना कि एंटीबॉडी अच्छी जमी टेट्रामाइसिन रहा क्लोरोमाइसेटिन रहा है कि एंटीबॉडी अच्छी एंटीबायोटिक नहीं पार एंटीबायोटिक के ना टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक नहीं पार आ क्लोरोमाइसेटिन these two antibiotics helps in this disease very effectively. Clear? So these are the typhoid. Next we will move to pneumonia. What? Pneumonia. This is another disease. You have also known about it in some extent. What is the cause? The cause is streptococcus pneumonia. You have to write only 5 to 6 sentences. It is enough for 2 marks. But every points you have to write about. That means cause you have to write about cause, symptom, prevention. All points should be there. Under each point or each heading you have to write 1 or 2 sentences. So 5 to 6 or 7 to 8 sentences will be enough. So what is the cause? It is causes due to streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumoniae है and Haemophilus influenza and Haemophilus influenzae है Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenzae. इनक्यूबेशन पीरियड हूँ छुआर इनक्यूबेशन पीरियड माने यही दुईटा इंडिविजुअल बा दुईटा पैथोजेन तुमको अटैक कलार केते दिन पर ए डिजीज हम इनक्यूबेशन पीरियड केते दिन सी रहिबो तुम बॉडी रे तापर डिजीज हम ना 1 to 3 days नॉट वीक्स एज लाइक वी डिस्कस्ड इन टाइफॉइड. Incubation period is 1 to 3 disease. There is nothing more about it and there is 1 or 2 symptoms also. निमोनिया हेले कौन हम निमोनिया तो हेले ज्वर हम जान फीवर हम ये नॉर्मल जोड़ा जान तुम मन भर अच्छी से आगे लिख फीवर कफ हेडाक है यहाँ सब लिखिदेव. आउ स्पेसिफिक सिम्पटम कौन लिम्फ एंड म्यूकस कलेक्ट इन आल्वेओली एंड ब्रांचेस ऑफ लंग्स है से कौन म्यूकस तुम जो ब्रंक्यूल रहा लंग्स ब्रंक्यूल रहा आल्वेओली रहा मन पड़ी ना नहीं लंग्स
एटा सब ब्रोंकाई ये पूरी छोट छोट हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है ना नहीं तापर आसो कौन तुम ब्रोंक्यूल तापर आसला आल्वेओली तो ये आल्वेओली रे कौन हम ना म्यूकस सब कलेक्ट हम म्यूकस सब जमा हो जगह आई जगह सब म्यूकस जमा हो तो म्यूकस गेट कलेक्टेड इन ब्रोंक्यूल्स एंड alveoli है तो सेठी कफ हम थंडा हम है थंडा निमोनिया है कौन जो थंडाटा माने एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए से निमोनिया हुए छुआ मन रखि है बट मन रखि इंटरेस्टिंगली इट डजंट इफेक्ट आवर लंग्स डजंट अफेक्टेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम रो सबू पार्ट अफेक्ट हम किंतु जब लंग्स रहा लंग्सटा पूरा एज ए होल अफेक्ट हेनी किंतु लंग्स भितर जो आल्वेओली रहा से म्यूकस जमा हम बट लंग्स उपर किसी एत इफेक्ट पड़े ना किंतु एटा बहुत सीरियस डिजीज छुआ फीवर हम हाई फीवर हम कफ हम हेडेक हम और इवन भी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो पारे है छुआ ट्रिटमेंट हूँ वैक्सीन अच्छी निमोकोकल वैक्सीन एटा लिखी ना तुम लिखिदेव छुआ डाकी दूसरी लेख वैक्सीन या ट्रिटमेंट कौन हम ना ट्रिटमेंट भितर आसीज तुम वैक्सीन दो वैक्सीन इज कॉन्सेंट्रेट प्रिवेंशन बट आम यहाँ सांगर लिख दूँ तुम वैक्सीन कौन या अच्छी ना निमोकोकल वैक्सीन ठीक है अंथेड़िया ना अच्छी तथापि लिख मन पकई निमोकोकल वैक्सीन नोट्रे अच्छी छुआ सब देख निमोकोकल PNEU निमो है PNEU निमोकोकल वैक्सीन अच्छी तुम तापाई नहीं पार आंटीबायोटिक कौन छुआ जदि होगला रोग वांस होगला आम कौन आंटीबायोटिक खाइबा जेहेतु आंटीबायोटिक कौन खाती कि छुआ बैक्टेरिया डिजीज बैक्टेरिया जदि अटैक करे बैक्टेरिया को मर्डर करने किल करने आम कौन खाती नॉर्मली आंटीबायोटिक खाती स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया गोटे बैक्टेरिया सो antibiotics will be effective in this case which antibiotic normally it is penicillin PENICILLIN and penicillin and streptomycin streptomycin these are two important antibiotics also ampicillin helps in this case ampicillin another antibiotic penicillin streptomycin and you can also write ampicillin so these are the three medicines which helps in treatment of disease once you are affected by this bacteria clear so we have already discussed about 3 disease and now we will discuss about common cold जोटा वर्तमान मार्केट रे जोर सोर चली ठंडा साधारण ठंडा जो आम कहते सर्दी होची है कॉमन कोल्ड एटा छुआ दिस इज फास्ट मन रख कॉमन कोल्ड इज नॉट ए डिजीज है इट्स नॉट ए डिजीज एटा गोटे छुआ डिजीज नुहे ठंडाटा गोटे रोग नुहे आ ठंडापाई कौन पार्टिकुलर मेडिसिन बा वैक्सीन आज पर्यंत बाहरी एमती किसी जमी पक्स बाहर आमर टाइफॉइड बाहरी कि आमर बहुत गुड़ा डिजीज अच्छी पोलियो भाइरस डिजीज बाहरी हेपाटाइटिस बाहरी तो ये रोग आज पर्यंत कौन ना वैक्सीन बाहरी है नो वैक्सीन फॉर कॉमन कोल्ड किसी भी वैक्सीन ना जोटा कि देदेले आमर को आ जिंदगी के ठंडा हेनी सेमती के देखिच ठंडा हम ही हम कारण एटा गोटे रोग नुहे दिस इज एन एलर्जी है कॉमन कोल्डटा कौन गोटे छुआ एलर्जी इज नॉट ए डिजीज एलर्जी हूँ गोटे रिएक्शन इट इज ए रिएक्शन तुम बॉडी चाहूनी गोटे जिनस को भितर को जावाई किंतु तुम कौन कर से जिनसा बॉडी भितर को नौच तो से बॉडी कौन कर राग बॉडी रागिना कौन हम रिएक्शन कर रिएक्शन कले कौन हम कि गोटे एक्सप्रेस कर तुम फिजिकल अपियरेन्स किसी गोटे एक्सप्रेस हम जमी कह पितुड़ी जानछ ना जोटा कुंडे हुए फली जाए तो से फलिला भाया हो पारे कि तुम स्किन रे कलर चेंज हो पारे कि इरिटेशन हो पारे इचिंग हो पारे ये सब रिएक्शन कर है गोटे डिजीज नुहे तुम बॉडी ठंडा गोटे
आलर्जी तुम बॉडी चाहूनी खाई सारिकी फल खाई सारिकी पानी पियो तुम बॉडी से चाहूनी जे जड़े ये एलुगुड़ा खाई सारिकी फल खाई सारिकी पानी पियो तुम कौन कर ना मीठा खाई सारे तापर मीठा लगला फलटा तो तापर ओबियसली तुम पानी पी दे ठंडा हम तुम बॉडी चाहूँ तुम रेस्पिरेटरी ट्रैक भीतर को डस्ट न जाऊ पॉलन न जाऊ कंटामिनेटेड फूड बॉडी न जाऊ फिर भी तुम से खाऊ तो कौन हम बॉडी रागिना कौन हम व्हेन इट एंगर it will react obviously it will appear in your outer appearance so that is a common cold समस्त जानी पारि एक्सपीरियंस appear तो हम नाकर बुझा आरंभ कर रनिंग नोज हम तो तेणुक यार सिम्पटम कौन कॉमन कोल्डर सिम्पटम कौन से विषय में तुमको कहबी तुम से सब जानी निजे लिखिदेव ठंडा हेल्ले ता सिम्पटम कौन देख रनिंग नोज हम नाकर बुझा आरंभ कर मुंड बिंध तंटी बथा कर सोर थ्रोट कहती से सोर थ्रोट आउ कौन हम हेडेक हम रनिंग नोज हम सोर थ्रोट तीनटा गला आउ किस हुए बॉडी आग भी हुए देह हाथ भी बथा कर रेस्टलेसनेस हम टायर्डनेस हम है ना आउ नाजल कंजेशन हम नाक बंद हो ना नहीं ये सब सिम्पटम तुम लिख मुझे कहबी कॉमन कोल्ड भितर खाली पॉजिटिव एजेंट हाँ आउ गोटे कथा या वैक्सीन ना कहीं वैक्सीन ना कहीं वैक्सीन ना या कौन बिकज देयर इज ए नो स्पेसिफिक वायरस व्हिच कॉजेस दिस डिजीज बुझीपार ना कौन सी गोटे स्पेसिफिक भाइरस जी की एलर्जी करे गोटे स्पेसिफिक भाइरस थे सीना तुम ता विषय वैक्सीन कर थर आम जानिले कोरोना भाइरस करुच्ची कोरोना आम कहूँ कोरोना भाइरस भावुचे कि नुआ आगे आगुरी भी थिला ये ठंडा कॉमन कोल्ड भितर भी कोरोना भाइरस अच्छी गोटे है तो आम पार्टिकुलर भाइरस जानिले सीना आम ता विषय वैक्सीन खोजा केते वर्ष लगे केते दिन लगे से पछ कथा किंतु पार्टिकुलर गोटे भाइरस जी रोग को करूँ आम ता विषय वैक्सीन काढ़ी दिंते एत सुधा जमीती कि तुम पोलियो भाइरस करुच्चे तो आम जानिले पोलियो भाइरस साइंटिस्ट मैंने रिसर्च कर आरंभ कले केमी न्यूट्रालाइज कर से भाइरस को वैक्सीन काढ़ीदे तो ये डिजीजटा कौन करे ये डिजीज देयर आर मोर देन 200 भाइरस देयर आर मोर देन 200 भाइरस और पैथोजेन व्हिच कजेस कॉमन कोल्ड 200 रु अधिका भाइरस बैक्टेरिया अच्छा जो मैंने बैक्टेरिया नुहे भाइरस जो मैंने कि ठंडा कराती कॉमन कोल्ड कराती तो हम केतरा भाइरस वैक्सीन आम ना गोटे ठंडा नापी 200 प्रकार भाइरस अच्छा जो मैंने कि आम कॉमन कोल्ड कर तो आम पार्टिकुलर जनक गोटे भाइरस होते सीना तो वैक्सीन काढ़ी था तो 200टा वैक्सीन खाली कौन आम ना कॉमन कोल्ड को प्रोहिबिट करने कॉमन कोल्ड प्रोटेक्ट करने निजुक 200 प्रकार वैक्सीन ना कि दैट इज नॉट पॉसिबल सो देयर इज नो वैक्सीन बिकॉज देयर आर more than 200 clear there are more than 200 different virus ये पुणी सब अलग अलग प्रॉपर्टी अलग नेचर अलग है 200 more than 200 different virus which causes common cold है अच्छा तो बहुत गुड़ा भाइरस अच्छा जी कि कॉमन कोल्ड करेंगे तो भर गोटे भाइरस जेकोसी गोटे भाइरस भी कर 200 प्रकार सेमती अच्छा तो भर मुझे एग्जांपल तुमको दे दूँ से भाइरस जमीती कि गोटे राइनो भाइरस इज ए कॉमन कोल्ड कजिंग भाइरस आ जानी आम बॉडी आमको जो ठंडा हो 30 रु 40% लोक यही भाइरस ही कराए राइनो भाइरस जो 30 to 40% कॉमन कोल्ड पेशेंट्स एफेक्टेड बाय दिस भाइरस है 30 रु 100 जन जदि न देख पेशेंट ठंडा पेशेंट ताके भितर 30 रु 40 जन को राइनो भाइरस अटैक करथिबो आउ कि अछि कोरोना भाइरस तमे भाबु नथुबो कोरोना भाइरस एबे आसी जेडा आगुरु छुआ थिला कोरोना भाइरस आगुरु थिला बट वर्तमान जोटा आसी से टिके डेंजर कौन पाई ना यार मॉडिफिकेशन है आम जो आंटीबायोटिक खाऊँ तो से आंटीबायोटिक सहित सी निजक मॉडिफाई कर देछि किसी म्यूटेशन आछि ता बॉडी रे परिवर्तन आछि सो दैट आम ताकू मारिबा पई ताकू प्रिवेंट करिया पई ताठारो आम वैक्सीन एते सहज रे काढी पारना वैक्सीन बाहरिबो टाइम लगुच टे कारण तार प्रॉपर्टी बहुत चेंज हो माने से फ्रिक्वेंटली चेंज कर जो कोरोना भाइरस अच्छी अमेरिकार से कोरोना भाइरस नहीं सी टे आउ टे डेंजर भाइरस बुझीपार ना ना तो प्रॉपर्टी सब चेंज हो चलुची म्यूटेट होगी जाऊँच से परिवर्तन आसूँ तो सेटा कोरोना भाइरस आगुरी अच्छी किंतु वर्तमान जोटा आसी इट इज मोर डेंजर ड्यू टू म्यूटेशन इन नेचर है आउ किस अच्छी ना इन्फ्लुएंजा भाइरस इट ऑल्सो कजेस
कॉमन कोल्ड है राइनो भाइरस कोरोना भाइरस इन्फ्लुएंजा भाइरस एंटेरू भाइरस है एंटेरू भाइरस आउर बहुत अच्छी नोट्रे लिखाई छुआ देखीदेव है तो ये है सब छुआ पॉजिटिव एजेंट या पर आसला सिम्पटम लक्षण कौन देखा कहीदेली रनी नोज हो सर थ्रोट हो आउ नाजल कंजेसन हम माने नाक जाम हो ना नहीं रनी नोज माने नाकरू पानी गड़ुव सब रन करुव रनी नोज सर थ्रोट तंटी बसीज कफ हम है कफ हम आ कौन हम स्नीज हम छिंक हम आउ कि हम ना नाजल कंजेसन नाक बंद हो नाजल कंजेसन यहाँ सब लक्षण छुआ थंडा है यहाँ लिखी कि छुआ तुम लिखिदेव सब है मुंड बिंधिब देह बता कर नहीं यहाँ सब लिख कज्रे आउ एक पुणी केमी प्रिभेन्ट करवा प्रिभेन्सन किस थंडा रक्षा पाइबा आम कौन करवा जहाँ को थंडा हो पेसेंट मानक से दूरी रहा एवॉइड फ्री मिक्सिंग विथ पेसेंट पेसेंट सहित आम फ्रीली मिसवानी आउ कौन हो प्रिकसन ड्यूरिंग स्नीजिंग हाँ आउ गए बड़ कथा कोरोना टाइम तुम शिखी जो जन थर मत ठंडा मुझे मत भी थंडा है जदि मत ठंडा है बाहर के छिंकबी लोक बस कि पब्लिक रे मुझे हाथ में छिंकवा कथा नुहे कहीं इफ यू वांट टू स्नीज देन इट शुड बी इन योर एल्बो एल्बो रे छिंकब ना नाक आ पार्टी बंद करके छिंकब कि काशब है यहाँ गोटे बड़ कथा मन रखि प्रिभेन्ट कर तुम तो तुमको तो ये अन्य जन को आउ हेनी तुम रक्षा एवॉइड कर आउ पानी फल खाई पानी पीब ना बाहर डस्ट मस्ट जगह मास्क यूज कर सब तो जानी ए विषय बेस कह कौन तुम ट्रिटमेंट तो कहली नो वैक्सीन तापाई वैक्सीन किसी ना आंटी हिस्टामाइन टैबलेट जोटा एलर्जी यहाँ जेहतु गोटे एलर्जी हिस्टामाइन एलर्जी करे तो आम कौन करवा ट्रिटमेंट रे वैक्सीन तो नहीं पारिबानी परमानेंटली आम बंद कर पारिबानी रोगटा किंतु किसी से जेहेतु एलर्जी आम से एलर्जी करुवा जिनस किए हिस्टामाइन एलर्जी करे तो आम आंटी हिस्टामाइन टैबलेट यूज कर आंटी हिस्टामाइन मेडिसिन यूज कर है डस्ट ठारू आम दूरे की रहा आउ कि आउ तो जानी सब मेडिसिन दी ना लिखिदेव छुआ सीना रेस्ट लिखिदेव यहाँ गोटे थंडा मेडिसिन मक्स लिखिदेव नामकोल लिखिदेव है आउ आजिथ्रोमाइसिन एमती किसी मेडिसिन ना भी टैबलेट ना मन रखिद आ विटामिन सी कोरोना वाला पेसेंट वाला को कहते सब डॉक्टर विटामिन सी खाओ छुआ विटामिन सी खाइले कोरोना रू टिके टिके रक्षा पाइब पूरा पाइबनी आजिथ्रोमाइसिन एटा भी गोटे भल मेडिसिन ठंडा रोग so these are the treatment. So now for today we have already discussed about 4 different disease and their causing agent, their symptoms, their prevention and their treatment. So आज that's enough.